Good morning, students of class 10th. Yesterday we have read the chapter Nelson Mandela, Long Way of Freedom. Today I am going to the last paragraph of the lesson. Please read it by heart. Open your book or see on the screen. Better that you open your book, and what I am going to read, please associate with your book. But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. तब मैंने धीरे धीरे महसूस करना शुरू किया कि केवल मैं ही नहीं बल्कि मेरे भाई बहन भी फ्री नहीं थे. I saw that it was not just my freedom that was curtailed. तब मैंने महसूस किया केवल मेरा ही फ्रीडम नहीं बल्कि मेरे जाते थे देखने वाले सबकी फ्रीडम को ख़त्म कर दिया गया. But the freedom of everyone who looked like I did, जैसा मैं दिखता था काले. That is when I joined the African National Congress. और यही बात है कि मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन किया. And that is when the hunger of my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people. इसीलिए मुझे अपने से ज़्यादा मुझे अपने लोगों के स्वतंत्रता की चिंता हुई, स्वतंत्रता की भूख लगी. It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life. मैं चाहता था कि मेरे लोग भी सम्मान के साथ, डिग्निटी के साथ जीवन जिए. That transferred a law-abiding attorney to become a criminal. लेकिन उस समय व्हाइट डोमिनेंट की सरकार थी. ऐसा सोचना देश के विरुद्ध अपराध था. That turned a family-loving husband into man without a home. That forced a life-loving man to live like a monk. इस प्रकार परिवार चलाना होता था, घर चलाना होता था किसी भी हस्बैंड के लिए, तो वो साधु हो जाता था. I am no more virtuous of self-sacrificing than the next man, but I found that I could not even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed and I knew my people were not free. मैंने सोचा कि मैं एक निश्चित स्वतंत्रता लेकर नहीं जीऊँगा, मैं सबके लिए बराबर प्रयास करूँगा. I knew my people were not free. मैं जानता था मेरे लोग फ्री नहीं हैं. Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were chains of all of them. अगर मेरे लोगों में किसी के ऊपर भी फ्रीडम नहीं मिली है तो किसी के ऊपर नहीं मिली है. The chains on all my people were chains on me. अगर मेरे लोगों के ऊपर चेन्स हैं, बंदिशें हैं, तो मैं जानता हूँ कि मेरे ऊपर भी बंदिशें हैं. I knew that oppressors must be liberated just as severely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. मैं जानता था कि जो अत्याचार करने वाले हैं वो ऑप्रेस्ड हैं. अगर कोई आदमी किसी की फ्रीडम लेता है तो वो आदमी घृणा में कैद है. He locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. अगर कोई किसी को सताता है, किसी से घृणा करता है, किसी को पीटता है, वो जो है किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित है, narrow-minded है. I am not truly free. I am taking away someone else's freedom. अगर मैं किसी का फ्रीडम लेता हूँ तो मैं भी फ्री नहीं हूँ. Just as surely as I am not free when I am freedom is taken from me. अगर मैं किसी की स्वतंत्रता लेता हूँ तो मैं फ्री नहीं हूँ. द ऑप्रेस्ड एंड ऑप्रेसर alike are robbed of their humanity. अत्याचार करने वाला, अत्याचार सहने वाला दोनों ही मानवता के दुश्मन हैं, मानवता को खत्म करते हैं. Dear students, today this lesson is completed. On the screen you may see oral comprehension check. You ask and check your knowledge and do the homework. I am giving you homework here. Thinking about the text. Here 5 questions are given.
do all the 5 questions in your notebook and send it to me, and make the list of such pairs of nouns and verbs in the text. And dear students, using the definite articles with names, read the paragraph below, fill in the blanks with the noun forms of the verb and brackets. All the questions must be done in your notebook and send it to me through app or WhatsApp group. Okay, bye students, goodbye.